ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் அனுமதி கோருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, நவராத்திரியின் 4வது நாளான சதுர்த்தி தினமான இன்று தாங்கள் ஸ்ரீ கூஷ் மாண்டாவாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தேவியின் சுரூபத்தில் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் முழுமையாக அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் தூய அறிவையும் தெய்வீகத்தை பற்றிய புரிதலையும் நாங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இன்றைய நாளில் தங்களை நோக்கி செய்கின்ற இந்த தியானத்தில் எங்களை முழுமையான தியானத்தினுள் ஆழ்த்துவதுடன் அதற்குரிய ஆனந்தத்தையும் நாங்கள் உணர்வதற்கும் இன்றைய தேவிக்குரிய குணங்களை எங்களுக்கு அளித்து எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கும் தங்களை நோக்கி நாங்கள் செய்கின்ற இந்த எளிய பூஜையையும் தாங்கள் மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வந்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्रीसहस्रारस्वामिनि मोक्षप्रदायिनि माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகசிராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவியாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் இடது பிங்களா நாடியில் உள்ள ஏற்ற தாழ்வுகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இட நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இட நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது இட நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது பிங்களா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம்.
தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில், அமைதியான மனநிலையிலும், திருப்தியுடனும் ஆனந்தத்துடனும் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது சுழுமுனை நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் இருக்கின்ற தடைகளை அகற்றட்டும். எங்களுக்குள் தூய ஆத்மாவிற்குரிய நிலையை நிலைநிறுத்தட்டும். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைந்து நாங்கள் வேண்டுவது என்னவென்றால், எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் தூய ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்திவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை மூலாதாரத்திலேயே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுக்குள் தங்களின் ஆசீர்வாதத்தை முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள். அதன் மூலமாக எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற கவனம், மாயைகள், அறியாமை எங்களுக்குள் இருந்து அகன்று போகட்டும். மெதுவாக நமது கவனம் நமது நாபி சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு. எங்களுக்குள் பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த மனித பிறவியில் நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கு தங்களின் அருளாசி மட்டுமே காரணம் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு தியானத்தின் சக்தியை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எங்களுள் அமைதியையும் திருப்தியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதோடு
தர்ம நிலையையும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தி செயல்பட தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இல்லம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் தங்களின் தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் பரவி அதன் மூலம் தேடுதல் உள்ளவர்களை நாங்கள் கண்டறிய ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனம் பவசாகரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி குருவாவீர். எங்களுக்கு குரு தத்துவத்தின் உண்மை நிலையை உணர வைத்து எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளும் பொய்யான குருமார்களின் போதனைகளும் எங்களுக்குள்ளிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் குரு தத்துவத்தை உணர்ந்திருக்கிறோம். அதை நாங்கள் மேன்மேலும் உணரவும் மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் ஆசிர்வாதங்களையும் அவர்களின் தத்துவங்களையும் நாங்கள் முழுமையாக பெறுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களிடம் பழகும் பொழுதும் பேசும்போதும் எங்களுக்குள் ஒரு குருவின் கண்ணியமும் ஞானமும் எங்களுக்குள் நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனம் நமது சகஸ்ராரம். தாயே, ஸ்ரீ கூஷ்மாண்டா தேவியாக அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள். எங்களின் தியானத்தின் சக்தியை நாங்கள் முழுமையாக பெறுவதற்கு எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள். நாங்கள் எண்ணங்களற்ற தூய நிலையிலிருந்து தியானம் செய்ய தாங்களே அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்மதாயினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்மதாயினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக நமது கவனத்தை அன்னையின் சொற்பொழிவில் கொண்டு வந்து தியான நிலையிலிருந்து நமது தியானத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். அன்னையின் ஆசிர்வாதத்தை முழுமையாக பெறுவதற்கு நாம் சரணடைதல் மிக மிக முக்கியம். நவராத்திரி பூஜையின் 4வது நாளில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். Today we have gathered here to do the Navaratri Puja. There were 9 times when the major incarnations of the Mother of this universe were manifested. They were manifested with a purpose. That purpose is to protect her bhaktas, her disciples, her children. This was a binding love. She could not escape it. Mother's love is binding. She cannot escape it. And she has to manifest it, work it out, and give that protection to all her children. This protection in the modern times has taken another form. In those days, the evil was trying to harm, to destroy the people who were righteous, who were bhaktas, who were doing good things, who wanted to lead a very religious life. So to save them, she incarnated. To protect them, she incarnated. But they knew what was good. They knew what was wrong. And they wanted to preserve their good life, their precious life. They didn't care for money, they didn't care for power, but just they wanted their life. Means they wanted to be alive, to worship the goddess. And when they were troubled or harmed or destroyed by these evil forces, she had to manifest. But in modern times, it's become very complicated, as the modern times are complicated. First of all, in the mind, in the lifestyle, in the society of good human beings, righteous human beings, fear of the wrong has entered. Like they are afraid, say, of their priests, of their churches, of their temples, of their mosques, which are all false. They are not afraid of God. They don't believe in God. They think they have created God and they can manage God. So who is God? The way they behave, you can see clearly that they do not recognize the existence of God. God Almighty, who is a wrathful God. They are not at all worried as to what will happen to them. They don't even believe in the second life. They don't believe in the resurrection. They are very short-sighted, evil people doing all kinds of evil things. So, somehow or other, as soon as you are born into some sort of a brand. You are this, you are that, you are that, you are that. As soon as you are born. So the first brand comes onto this modern man is of a religion to which he belongs. We can't avoid it. He has to be jolly well belonging to some religion. You go anywhere, even in the passport, nowadays they have stopped it. Otherwise they used to ask, what is your religion?
And in India, if you said you had no religion, they would not give you a passport, because you are not yet qualified evil person, or you are not following qualified evil people. So that very simple, gullible, good people, very righteous, believers of God, developed this kind of a fear which was put into their heads by these false people. That if you don't do like this, if you don't pay money to us, then God will be wrathful. If you do not come to the confession, then God will be angry. If you do not tolerate our nonsense, God will be angry. All these things started going into the brains of the people very easily. In some religion, they believe there is no sin in drinking. In some religion, they believe there is no sin in marrying many women. In some religion, they believe that you can have caste system. All is anti-God, absolutely anti-God activity perpetuated into the society by these priests who are supposed to be in charge of the religion. So the first horrible conditioning we have when we start Sahaja Yoga is this. So to start something afresh, they find it very difficult. So the first protection mother had to render is from this condition. The second one is that of the country. Either you belong to this country, to that country, or to that country. And these days every country is competing with each other in all kinds of corruption, mafia, all kinds of things. Every country. Suddenly it is so. You have faith in one country, you find, oh no, they were supporting certain person secretly. So whether they are democratic or anything, there is a kind of a mafia working everywhere under some. So the so-called laws also are only for people who are simple, gullible, pure citizens, and not for the people who put those laws on them. They take bribes, they take all kinds of things, but still they are supposed to be in charge of law, doing all kinds of illegal things. Because they have made the law, so they know how to be illegal. So this is the second type of fear that is in the minds of the modern time. Then the third thing was the war. Wars after wars came in. So many people developed a kind of a fear about war. And as a reaction, they developed a kind of a stupid ego, just they said to protect themselves. In protection themselves, they have built up a big ego, and they are now becoming very, we should say, aggressive people. So this kind of a wider range, I should say, of fear, it can be directed into any direction, it can be directed towards anyone. Then comes is the fear of risk. Vishal. Now I am told that neo-Nazism is taking its own course and is coming up like a little snake. This is another area which is very dangerous now working on. Now in the minds of seekers, and they are seeking, they have been to many gurus, they have read all kinds of books, but they are seeking. They are seeking, yet drink any kind of water, develop all kinds of diseases. What can you do? You are seeking after all, you are thirsty. It has to be excused. And that's how they develop lots of problems, not only in their body, but also in their brain. And now it's a very delicate thing. If you tell somebody
that you have been to such and such Guru. He doesn't want to hear. Because for him, now the Guru has become the last one. You cannot say anything against his Guru. Now, when he starts suffering, then he may accept. But to take it out that Guru is also very delicate, because if you want to take out that Guru, then he might be hurt. So it's a very delicate operation. Then the modern society, the less said the better. The norms of modern society are given to us by people who were characterless, like Freud, who had no sense of morality, or by drunkards, though they don't have any statues of drunkards. But most of them, if you see the abandonment of our value system, comes through drinking. And the drinking was there, but not to this extent. I mean, everybody was not a drunkard. These days, everybody can be a drunkard. And there's no shame about it. With that drinking, our value system started dropping down, and people have accepted now the normal thing is abandonment. This is another way. Formerly, the parents used to support a person if he would take to God, if he would take to righteous life, or to something higher. And if they saw these qualities in their child, they used to be happy. But these days the other way around, the parents don't like it. As if the parents have lost everything in themselves, so they want to hold on to their children, grandchildren, and possess them. And brainless creatures, because their brain has been already washed off. There's nothing in their brains. To fight the parents also is a big problem. So this kind of a fear is also there, that my mother should not know, my father should not know this. You can say from all sides. The fear is burning like flames. And we are now here in Kali Yuga. We have started Satyuga. So the way we have to work out our protection has to be mutual. Mother, of course, is there to protect you all the time. Her powers are there to protect you. But surprisingly, in the modern times, there is one condition which has to be fulfilled. Because in those days, good were good and evil were evil. There was no mixing up. So once they asked for goddess, they accepted her, she came in her real form and she worked it out. But in modern times, you must know that all these evil things are also lingering in your head little bit here and there. People are extremely superficial. They are very much prone to the mass attitude, fashions, things like that. Sort of their personality is not that developed as that of those bhaktas who knew they were right, who knew they were righteous, who knew whatever they were doing was correct and were standing on their legs firm. So, the modern Sahaja-yogi is very different from the Sahaja-yogi of olden times. Because in the olden times, it was not easy to get realization. 1 in a billion or in a trillion. And they had to work very hard. So as they worked hard, very hard, they got cleansed and built up themselves and toiled. Like any art piece which takes time, is done with care, is definitely 1,000 times better than these modern artists just putting 2-3 lines like this. So today's human being is like a modern artist. You put one line and you say, you must see this into that person. You must have an identity. I mean, what identity you can have? With one line, you say, find out the identity. So the
Sahajogis which are today here have to realize that all these things are surrounding us. And these evil forces are also there. There are some within us, some are without. So it looks to be a very difficult task, but it's not. Because one condition, if you can understand, is that you have to recognize me. I know I'm Mahamaya, I'm really very clever at it. But I'm truthful. I do not have crocodile tears. I cannot have. I'm truthful. But still, I'm Mahamaya. So to recognize me, what should we do? If we recognize, then you are protected. And the cleansing is the simplest thing in Sahaja Yoga is to be collective. If you are not collective, then know that something is wrong with you. If you are collective, then as if you are taking your bath in the river Ganges. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do individual sadhana much, you don't have to, just be collective. If you are collective, if you are enjoying the collective, then you should know that you are clean. No blemishes there. They are absolutely honest. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து இன்றைய நாளின் பூஜைக்குரிய பிரார்த்தனைகளையும் மந்திரங்களையும் கூறி தியானத்தில் இருப்போம். जय श्री माता दी। கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து புஷ்பங்கள்லாம் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு அர்ச்சனை செய்யலாம். கணேஷ பிரதோஷம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि
सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं दकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः நவராத்திரியோட சதுர்த்தி நாளாக இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியை ஸ்ரீ குஷ்மாண்டா தேவி ரூபத்தில் தியானம் செய்து பிரார்த்தனை செய்வோம். மெதுவாக நம்ம கவனம் ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குஷ்மாண்டா தேவி. சிம்மத்தில் அமர்ந்த சங்க சக்கர கதாபத்ம ருத்ராட்சமாலயம் கமண்டலம் அமிர்த கலசமும் கையில வைத்து தங்களுடைய பொலிவான நிறத்தால் எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அறியாமை என்ற இருளை பயத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. இந்த சராச்சரத்தை தாங்கள் தான் படைத்தீர்கள். சிருஷ்டிகர்த்தியாக ஒரு அண்டத்திலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை
உருவாக்கு. சூரிய மண்டலத்தை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள் தாயே. அந்த ஒளியால் நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் மேல்மேலும் வளர, இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து இருந்து வளர எல்லா சக்தியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சியை தாருங்கள். திருப்திகரமான நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஜெகஜனி சிருஷ்டிகர்த்தி எங்களை க்ஷேம சௌக்கிய ஆரோக்கியத்தோடு ஆன்மீகத்தில் திடமாக வளராலும் புரியுங்கள். श्री कुष्मांडा देवी साक्षात ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुष्मांडा देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் ஹிருதயத்தில் வைத்து ஸ்ரீ தேவியாக கவச்சத்தை கூறுவோம். ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ சண்டி கவச்சஸ்ய பிரம்மா ரிஷிः அனுஷ்டுப் சந்தः சாமுண்டா தேவதா அங்கன்யாசோக்தமாதரோ பீஜம் திக்பந்த தேவதாஸ்தத்வம் ஸ்ரீ ஜகதம்பா பிரீத்யர்த்தே சப்தசதி பாடாங்கத்வேன ஜபே விநியோகः. ஓம் நமश्चण्डिकायै. मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह. ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता. उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्था शरणं गताः. न तेषां जायते किञ्चित् नाशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः. प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं हेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैनृत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्न्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवो रक्षेत्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवो रक्ष्मी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपौलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कद्गयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेरुं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशां चैवोद्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस्यां स्थितिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुर्रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथान् रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेतु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राश्च लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्
इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकाधयः स्थावरं जङ्गमं चैवं कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवे राजस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कुप्त्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति श्रीदेव्या कवचं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। മെതുവാളിലൂടെ കവന്നു സഹസ്രാർത്ഥത്തെ കൊണ്ടുവന്നു அமைதியாக சில நிமிடம் ஞானத்தில் இருப்போம். ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம நைவேத்தியம் எல்லாம் வச்சிருக்கோமா? ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு ஆர்த்திக்கு தயார் பண்ணலாம். நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஆர்த்தி பண்ணலாம். सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी।
दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार, माँ कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
साक्षा श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय. நமஸ்காரம் பண்ணி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து 2 கைகளையும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு இன்றைய தியானத்துக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் எப்பொழுதும் எங்கள் வைத்திருங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.